तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर मुकुल संगमा ने फोकस कार्यक्रम को लेकर एमडीए सरकार पर अपना हमला जारी रखा और योजना से जुड़े फंड के बारे में सरकार से सवाल किया कि हम एकीकृत बेसिन विकास और आजीविका संवर्धन कार्यक्रम के विकास के माध्यम से पैसा लाए हैं। हम इस योजना में भागीदार प्राप्त कर उद्यमशीलता का निर्माण करना चाहते थे। फोकस योजना उसी योजना का हिस्सा है। मैं एमडीए सरकार से पूछना चाहता हूं कि पैसा कहां गया। डेवलपमेंट प्रोग्राम उनका परफॉर्मा आवाज़ेंगे या बेसिक डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं थ्रू या दंगाराम को राबे उठाना इंटीग्रेटेड बेसिक डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड प्रमोशन प्रोग्राम ना बाबू इन्हीं मीनिंग करो मायना to build entrepreneurship and sustainable livelihood by building partnership नियारा रिएक्टिंग मेघालय मुकुल संगमा के आरोपों पर पलटवार करते हुए उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग ने कहा कि मुकुल संगमा के पास कोई मुद्दा नहीं है तो वह बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। रही बात योजनाओं की तो उनके 8 साल के कार्यकाल के दौरान होटल क्रोबरो को कंप्लीट नहीं किया। इसी तरह जो योजनाएं शुरू तो की पर वह तो चल नहीं पाए। आज उन योजनाओं को मौजूदा सरकार बेहतर और नियमित ढंग से चला रही है। उप मुख्यमंत्री प्रिस्टोन तिनसोंग ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों का खंडन किया। No, I think let me just remind Mukul has to also understand himself. I think before election 2017, what he did, even even the cattle, he distributed cattle, and then he gave 5,000 to each family. I don't know what he has done, and then there, in fact, it's so irregular, I should say. So therefore, I think you should ask from Dr. Mukul Sama himself. But what we are doing right now, be it focus, be it a pride, we are doing well. And then the people who receive it also, be it the SHG, be it the society, and be it the cooperative society. I mean, they are being blessed with these schemes. We implement it. But he is trying to say that the MDA government does not have new scheme, but in fact they are just taking credit out of the schemes that have been implemented during his time. You see, Mukul Sama, he has been the chief minister for 8 years. Can you please ask him, during his tenure, why not he completed Kroboro Hotel? Huh? Why not he completed the Kroboro Hotel? Are we taking credit of that? But of course, there are so many challenges. But ultimately, under the leadership of Kodrat Sama, Chief Minister, the present Chief Minister, the MDA government, we are able to complete it. And number two, now we are going to again inaugurate even JW Marriott Hotel in Jail Road. That also next month it's going to happen. So see, I would like to just tell you, let Mukul say anything, whatever. Because he don't have any issue anymore to say. And I know well, people also does not trust him anymore. So let him talk whatever he feel like talking. But the fact remains, this is the only government who completed those incomplete schemes in different level, in different areas. Okay, thank you.